Good afternoon, dear students and learners. Namaskar. You all are watching us on eVidya channel number 10 and also on our YouTube channel NCRT Official, and I am Kusum Prasad, and this is our very special session Teaching Learning Intervention for Inclusive Classrooms. और आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इनका नाम है मिस्टर निर्भय कुमार, और ये पूरे सत्र को साइन लैंग्वेज के माध्यम से दर्शाएंगे क्योंकि हमारी ये समावेशी कक्षा है जिसमें हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की, ताकि सभी बच्चे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे समझे, जाने और इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझें ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो. और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी mathematics, and in mathematics we are going to learn chapter 8, Introduction to Trigonometry for class 10th, and to teach this subject our today's expert is Ms. Swarnlata Sharma ma'am. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. थैंक यू कुसुम जी. हेलो व्यूअर्स. मैम है टीजीटी गणित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट स्टेट न्यू दिल्ली से. So ma'am will tell you about the trigonometry, but before we start the session we want to tell you about the various medium where you can send your feedback, your queries and your questions. So dear students and learners, you can contact us through our various medium. You can call us. Our phone number is 8800440559, and you can also email us. Our email ID is dth.class10@ciet.nic.in, and apart from this you can also drop your messages, your questions, your queries on our YouTube channel, that is NCRT Official. So before we start this program, we want to share a very important announcement regarding G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. तो अब हम रुक करते हैं हमारे इस सत्र की तरफ, यानी हमारा जो ये सेशन है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और हम रुक करते हैं मैम की तरफ. सो लेट्स बिगिन मैम. यस कुसुम जी, आज बच्चे सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10 में है, और वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, है ना. तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है जीवन में, है ना, और कैसे इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. वी हैव सी डियर चिल्ड्रन, you have already studied about triangles and in particular right triangles in your earlier classes. Let us take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to be formed. For instance, suppose the students of a school are visiting Qutub Minar. Now, if a student is looking at the top of the Minar, a right triangle can be imagined to be made. Can the student find out the height of the Minar without actually measuring it? And second situation is, suppose a girl is sitting in the balcony of a house located on the bank of a river. She is looking down at a flower pot placed on a stair of a temple situated nearby on the other bank of the river. A right triangle is imagined to be made in this situation. If you know the height of which the person is sitting, can you find the width of the river? In the situations given above, children, the distances or the height can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from three Greek words, namely
tri meaning 3, gon meaning sides, and metron meaning measure. Okay. So, can you see here right triangles we have, because it is inclusive classroom, we have for visually impaired learners these two triangles. And Kusumji, can you touch and see that the children in the class can realize that they are right triangles and they can feel the right angle, and right triangles need not be of one size only, they can be of different sizes. Yes, so, we can have this type of TLMs for them so that they can understand about right triangles in a better way. And we will consider the sides and angles of this right triangle to study about the trigonometric ratios, right. Now, in fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angle of a triangle. Early days astronomers used it to find out the distances of the stars and planets from the earth. Even today, most of the technologically advanced method used in engineering and physical science are based on trigonometrical concept. So, let us discuss about trigonometric ratios, children. The ratio of the sides of a right triangle with respect to the acute angles are called trigonometric ratios of the angles. Let us take right triangle ABC. Here, angle A is an acute angle. Side BC, which we call perpendicular, it faces the angle A, and AC, which is the longest side, is hypotenuse of the right triangle, and the side AB is a part of angle A, we call it side adjacent to A or base. Okay. Let us see in this picture here. We have, Kusumji, this is an elevated right triangle which the inclusive classroom, we can take this, teacher can prepare this and take easily to the class, and the children can be given to see that the feel of a right triangle is there, and the longest side here is AC, which is known as hypotenuse, and we have this as perpendicular, which is opposite to angle A. Okay, and this is base BA, which is also known as adjacent side. Okay. Okay. So, ma'am, CA is hypotenuse. Yes, CA is hypotenuse. Very Okay. good. It is the longest side, children. Always it will be opposite to a right angle. This they need And to in remember. this also we can see the hypotenuse. Yes, this is the hypotenuse, children. This one is the hypotenuse because this is the longest side. This is perpendicular and this is the base. Okay. Now, in this we have, children, 6 different trigonometrical ratios. They are sin theta, cos theta, tan theta, and 3 others which are again reciprocals of these corresponding ratios, namely cosec theta, sec theta and cotangent theta. Let us understand them. We have here, see, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. In this, Kusumji, see, sin theta is perpendicular by hypotenuse, as I told you, and cos theta is defined as base upon hypotenuse, and tan theta is defined as perpendicular upon base. Now, children, how to remember this? Yes, ma'am. My question is was this key. It's very difficult to learn these formulas. You are right. Any shortcut or any short way to learn this, memorize this, ma'am? Good, Kusumji, very nice. See, we have some tips and tricks to remember this, and if you remember this, children, and you will be able to use this very easily. We have for sin theta, we can write sum. Some people have curly brown hair through proper brushing. Here, as you remember, some people have. This is one formula. How? Okay. S reminds us of sin theta, P reminds us of perpendicular, and have may H reminds us of hypotenuse. So, you have some people have. Then come to curly brown hair. Okay. It means, ma'am, if we have learned one line, some Yes. people have. It means we have learned one formula. Very good. Sin Very theta good. is equal to perpendicular Upon hypotenuse. hypotenuse. Very good, Kusumji. So, cos theta in a similar way can be written as base upon hypotenuse.
And what about the tan theta? Through proper brushing. Here first T reminds us of tan theta, and P represents perpendicular and B reminds us of base. Okay. We have one more to remember. We have Pandit Badri Prasad Har Har Bole. This also children very popular it is, and children use it to learn. Here you have to note that order should be remembered, sine, cos and tan. Only then it will be, otherwise they will get mixed up with the formulae. In this you have numerators as P, B and P. See, sine theta numerator is perpendicular, which this Pandit is reminding us, and Badri is B for cos theta, and Prasad again numerator for tan theta. And similarly Har Har Bole becomes the denominator for these corresponding ratios. Okay. I hope it is clear. Yes. Now let us see the 6 different ratios, children. Sine of angle A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Cosine of angle A can be written as base upon hypotenuse, and tangent of angle A is equal to perpendicular upon base, right. Now let us see the converse, that is cosecant of angle A is reciprocal of sine of angle A. Secant of angle A is reciprocal of cosine of angle A, and cotangent of angle A is written as 1 upon tangent of angle A, that is reciprocal of tan theta or tangent of angle A. Alright. Now see in this right angle triangle we have sine A. Kusumji, how I can write down? Now let me remember Pandit Badri Prasad Har Har Bole. Okay. So sine A. See A angle के opposite में कौन सी side है? Perpendicular BC. Right. And what is the base? BA. And hypotenuse तो fix है, that is AC, the longest side. Okay. So sine A is BC upon CA, because BC is perpendicular and CA is hypotenuse. So it is P upon H. And what is cos A? Base upon hypotenuse. Base is BA and hypotenuse is CA. So it is B upon H. What is tan A? Perpendicular upon base. So is it BC upon BA? That is equal to perpendicular upon base. I hope it is very clear. Yes, ma'am. Pandit Badri Prasad Har Har Bole. Right. Now after understanding this, let us see the reciprocals. We have cosec A, children. Cosec A I can write down as 1 upon sin A, because it is reciprocal of sin A. That means hypotenuse will go to numerator and perpendicular will come to denominator. It becomes AC upon BC. And what is sec A? It is reciprocal of cos A, which I can write down as hypotenuse upon base, that is AC upon AB. And what about cot A? That is reciprocal of tan A. I can write base upon perpendicular, that is BC AB upon BC. And I think figure is very much clear. We know the base is AB, side adjacent to angle A, and BC is side opposite to angle A, which is known as perpendicular, and AC is hypotenuse. Good. Now having understood this, see this is a learning material in Braille script, Kusumji, for visually impaired learners. We as teachers can carry this type of notes for our special learners, visually impaired learners, and I think they will be very easily able to understand and memorize all this formulae if it is provided in the Braille script. Yes, ma'am. For this, the special educators can use the slate for Braille script here, and this is a stylus which is used to write down this Braille script. Braille script. So we should take special care of the special children in the class, right? So now with the help of this, let us do one question here. We have here given tan A is equal to 4 upon 3, find the other trigonometric ratios of the angle A. Let us first draw a right triangle ABC. We know that tan A is what? Perpendicular upon base, that is BC upon AB, that is 4 upon 3. Therefore, BC is equal to 4K and AB will be 3K, where K is a positive number. By using Pythagoras theorem, children, we can calculate AC square is equal to AB square plus BC square. What is this? Square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. So AC square is equal to
AB square plus BC square, which can be written as 4k whole square plus 3k whole square. What is 4k whole square, children? 16k square. Good. Plus 3k whole square, that is 9k square. What is 16 plus 9? Yes, 25k square. Now on solving, what will be the length of our hypotenuse? It will be AC is equal to 5k. Now we can write all the trigonometric ratios using their definitions. Let us try. See in this sin A, can you see the figure? We have ABC triangle in which angle B is 90 degrees, AB is 3K and BC Kusumji is 4K. Okay, and हमने AC अभी निकाला है, कितना था? 5K. Okay, so sin A is what? Perpendicular upon hypotenuse. So BC upon AC can be written as 4K upon 5K, that is nothing but 4 upon 5, right? K gets cancelled. What is cos A? It is base upon hypotenuse. Base is AB and hypotenuse is AC. So 3k upon 5k is equal to 3 upon 5. What is cot A? Kusumji, remember I told you it is reciprocal of tan A. Good. So that can be written as 3 upon 4. Okay? And cosec A is reciprocal of sin A. So sin A हमारे पास 4 upon 5 था, तो उसका reciprocal क्या हो जाएगा? 5 upon 4. Good. Now sec A is reciprocal of cos A. तो क्या हम उसको 5 upon 3 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now I hope you have understood, children. You must practice this question and I will be giving you some questions for homework also. You can try them. Before that, let us remember some important facts and tips which are very important. First one is, symbol sin A is used as an abbreviation for the sine of the angle A. Sin A is not the product of sine and A, children. Sine separated from A, that is the angle, has no meaning. This fact is true for other trigonometric ratios also. So always we will write them together, sin A, cos A, tan A, right, this way. The second point, important one, is the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary, that is they do not change with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same, okay, because it is ratio. We have here third one, if any one of the ratio is known, we can also determine the values of other trigonometric ratios with the help of trigonometric identities or relations. Okay, children. Fourth one, the value of sin A or cos A never exceeds 1, whereas the value of sec A or cosec A is always greater than or equal to 1. Okay. Fifth one, last one to remember, if sin A is equal to 4 upon 5, P upon H is equal to 4 upon 5. Okay. P is equal to 4k and H is equal to 5k, where k is a positive number. It is wrong way to write P is equal to 4 and H is equal to 5, because ratios of two numbers may or may not be equal to their numerator or denominator, children. Okay. For example, let us see, 8 upon 6 is obviously equal to 4 upon 3, Kusumji, right? But you see 8 is not equal to 4 and 6 is not equal to 3. Okay, I hope you have understood these points. You must understand them so that you understand trigonometry in a better way, right? Yes, ma'am. Now we have before some moving to the homework, ma'am, we want that we can take a look on the formulas again, so that our students can learn it and they will find it and they will have no problem in solving these questions. Sure, we will do that, and after that we will solve some questions also. Now children, see here, as Kusumji is requesting, we have a right angle triangle here, children. This is the angle theta. Okay, we have this symbol, Greek symbol, to represent angle theta. This is base, which is also known as adjacent side, and this forms the perpendicular, and the longest side is hypotenuse. Okay, so what is sin theta, children? It is perpendicular upon hypotenuse. Okay, what is cos theta? Base upon hypotenuse. And tan theta, Kusumji, is perpendicular upon base. Let us recall. Pandit, Badri, Prashad, Har,
हर बोले. Okay. Yes, The other formula also. Some people have. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Some people have curly brown hair. So cos theta is equal to base upon hypotenuse. And what is tan theta, children? It is perpendicular upon base, which can be remembered with through proper brushing. I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, every one line is for one formula. Very good. Some very people good. have for the sin theta Yes. is equal to perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse. And second line is curly brown hair Very is good. for cos theta. Very Is good. equal to base upon hypotenuse. हाँ. And third one is Through proper brushing is for tan Tan theta. theta. Very good, Is equal कुसुम to जी, आपको तो याद होगा ये सारे. perpendicular upon base. Very good, very good. मैम इससे बार बार रिपीट करने से जो हमारे लर्नर्स हैं उनको बहुत अच्छे से दिमाग में उनके ये बात आ जाएगी और ये जो आपने शॉर्टकट बताया है Yes. दे कैन इजीली लर्न एंड मेमोराइज मैम. हाँ, बच्चे इसको Yeah. यूज करते हैं क्लास में और बहुत अच्छे से फॉर्मूले उनको याद हो जाते जी. हैं, है ना, और फिर उनकी गलती नहीं होती है. बिल्कुल है मैम. ना. इसमें हमने रेसिप्रोकल्स भी हम देख लेते हैं. कोसेक ए क्या है? 1 अपॉन साइन ए, जिसको हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी. एंड सेक ए क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ए सी अपॉन ए बी. AB. And what is cot A? Reciprocal of tan A, that is equal to base upon perpendicular, that is equal to AB upon BC. ठीक है कुसुम जी? I think the ratios are very much clear. ये हमारा TLM था जो हमने प्रिपेयर करा है बच्चों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में. इस तरीके से अगर हम बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो बच्चे शायद बहुत जल्दी और अच्छे से सीख पाएंगे. जी, और ब्रेल के माध्यम से बच्चे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बहुत ही इजीली इसको सीख सकते हैं मैम. जी, वो जो लर्निंग गैप है ना वो हम इसको कवर कर सकते हैं अगर हम उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करें. बिल्कुल मैम. तो मैम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. यस, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. लेट अस सी. इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a. ठीक है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी. अब देखो sin a क्या था कुसुम जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो यू हैव 3k एंड 4k, है ना. मैंने आपको बताया था इसको 3 और 4 नहीं लिखना है, वो रॉन्ग हो जाएगा. 3k एंड 4k. अब बच्चों cos a हमें याद आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो इसमें बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो बेस हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना. राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं. तो इन ट्रायंगल CBA, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम हमें? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to sum of squares of other two sides, CB square plus BA square. ठीक है ना. longest side का square is equal to sum of squares of other two sides. ये हमें पता है कुसुम जी, तो हम इसको लिख लेते हैं 4k का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज BC? इट इज 3k होल स्क्वायर प्लस BA होल स्क्वायर. 4k का होल स्क्वायर कितना होगा? 16k स्क्वायर. और 3k का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9k स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर. ठीक है, अब हमें BA स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू BA स्क्वायर. तो 16 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? इट इज 7k स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर. इसको सॉल्व करके हमारे पास BA की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √7 इंटू k. स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर हट जाएगा. BA हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू k. तो ये हमारी वैल्यू आ गई कुसुम जी √7 इंटू k. अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? हमें cos A की वैल्यू बतानी है. cos A हमें याद है कुसुम जी, इट इज कर्ली ब्राउन हेयर, है ना. तो BA बेस है और हेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये हो गया CA. ठीक है, तो BA हमने अभी निकाला, कितना था? √7 इंटू k. और CA कितना था?
4 इंटू के, तो के तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास √7/4 वैल्यू आ गई cos A की। ठीक है, एक और वैल्यू पूछी है हमें, कौन सी पूछी है? tan A। tan A क्या होता है? It is perpendicular upon base. Yes. So through proper brushing children, so CB upon BA is equal to, CB कितना था? 3K और बेस कितना था? √7K। ठीक है, K कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो 3/√7। इस तरीके से हमने cos A और tan A की वैल्यू निकाल ली जी। ऑलराइट। बिल्कुल मैम, अब वक्त है कीवर्ड्स का। हाँ जी, तो एक बार से हम कीवर्ड्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे आज की कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट वन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यस, सेकंड है हाइपोटेन्यूज, थर्ड है परपेंडिकुलर, और लास्ट एंड द फोर्थ इज बेस। और मैम अब हम मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। यस, बच्चों को हमने सिखाया है वैल्यूज़ कैसे के निकालते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों, प्लीज़ ट्राई करिएगा। आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसमें थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ मैं आपको। cot A को हम क्या लिख सकते हैं? 8/15। ठीक है, तो अब इससे सारी रेशियोज निकाल लेंगे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC, right angled at B, AB is given as 24 centimeters, BC is given as 7 centimeters. Determine, first part है sin A and cos A, और सेकेंड पार्ट में हमें डिटरमिन करना है sin C and cos C। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर यू विल ट्राई। And we have modified homework also for today, that is first question, if sin A is equal to 1/2, then the value of cot A is, there are 4 options. First one √3, second one 1/√3, third one √3/2, fourth one 1. Second question is, the 2 legs AB and BC of a right triangle ABC are in the ratio 1:3. What will be the value of sin C? Again there are 4 options, A √10, B 1/√10, C 3/√10, and fourth option D is 1/2. जी, Okay? और मैम ये हमें उम्मीद है कि आज सेशन में उन्होंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया और ये बहुत ही ईजिली हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स इसको कर लेंगे। और स्टूडेंट्स आपको किस फॉर्मेट में भेजना है वो भी हम बता देते हैं। आप अपना नाम मेंशन करेंगे, क्लास लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, एक्सपर्ट का नेम, टीचर का नेम भी लिख सकते हैं। आज की एक्सपर्ट स्वर्णलता मैम का नाम मेंशन कर सकते हैं आप, आज की डेट लिखेंगे और एक फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो ज़रूर लगाइएगा। और इसको आपने कहाँ मेल करना है वो बता देते हैं। आपने मेल करना है dth.class10@ciet.nic.in पर। तो आप ये सारे होमवर्क और मॉडिफाइड होमवर्क ज़रूर करके भेजिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके होमवर्क का। तो मैम आज का जो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था मैम, हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझा। आपको याद रहेगा कुसुम जी? बिल्कुल मैम, है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यस, ठीक और है, दूसरा वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो वो दोबारा से को देख सकते हैं और एक कहीं नोट कर सकते हैं। हाँ, ताकि उन्हें याद रहे। बिल्कुल, हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करें तो शायद उनको समझने में बहुत आसानी होगी। हम अच्छे से TLM प्रिपेयर करके क्लास में प्रिपेयर करके जाएंगे तो शायद बच्चे इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों को, जैसे आपने सारी बताया कि ब्रेल में हम बता सकते हैं इनको, और टीचिंग लर्निंग एड्स की मदद से हम परपेंडिकुलर और ये ट्रायंगल्स से दिखा सकते हैं बच्चों को, तो ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू व्यूअर्स।
So dear students and learners, it's time to wind up this session, and before we wind up, we want to share a very important announcement regarding G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. और हम जाते जाते हम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस्टर निर्भय जी का भी। आपने भी बहुत खूबसूरती के साथ साइन लैंग्वेज के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझाया। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन, लेकिन हमारे बहुत सारे सत्र, बहुत सारे रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र अभी मौजूद हैं, तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।